Okay. November 2022. Okay. This says on average 1 in 50,000 people have a certain gene. So again, I'm talking about a probability of success. Use a suitable approximating distribution to find the probability that more than two in a random sample of 150,000. So I give you a value for lambda or n. So you can calculate lambda. So I get 3. I'm asking you for more than 2. So 1 minus probability of 0 minus probability of 1 minus. Now, do you have the calculation? Point. कुछ गड़बड़ भी है 0.577. Calculation is still okay. Okay, then it says a six-sided die has numbered faces marked this, and the die is thrown 300 times. It shows a 6 on 56 throws. Calculate and approximate for the probability that the die shows a 6 on one throw. So again, this is a pair sample proportion का सवाल है और वो उसी तरह calculate करेंगे जैसे अभी पिछले वाले में. So I know that generally अब ये जो sample है, when the die is thrown 300 times, it shows a 6 on 56 throws. So the sample proportion is 56 out of 300. So I'm trying to test कि ये proportion of the population क्या बनता है. I want to say this is 56 out of 300. Is that a whole number in terms of decimals? Let me just see. No, it's not. ये थोड़ा बड़ा number ही है. So let's just stick to that. 96% confidence interval. तो मैं यहाँ से जाके 98% treat करूँगा और 98% directly available नहीं है. So what I will have to do is I'll have to take this 9798 और इसमें 2.04. 2.04. ओके और फिर रूट के अंदर अच्छा सॉरी 0 हाँ मैंने कुछ मिस कर दिया ना 054 ओके 054 ओके हाँ सॉरी 56 out of 300 or 244 out of 300 over 300. Okay, 0.14 or 0.233. Okay, सही है. This was simple 3 marks. अब कहते हैं कि Marola claims that the die is biased. Use your answer to party on comment on this claim. Now, typically when you want to throw a 6, तो उसकी probability आती है 1/6, which means that 1/6 जो होती है वो होती है 0.1667. Okay, 167 होती है. Use your answer to part A to comment on this claim. Now, is 0.167 lying within this
Yes, it is lying within this interval. So with a 96% confidence, you can claim that the die is not biased because 0.167 lies within the interval. Okay. And this is question number 3. It says a random variable value takes on 0 and 3 and find the probability density function as shown in the diagram where C is a constant. So this is simple के area जो होगा वो equals to 1 होगा, base 3 है, height C है, area 1 होगा, so C जो बन जाएगा वो 2/3 बन जाएगा. Find probability of x greater than 2. Now there are various ways of doing this. मुझे ये वाला area निकालना है, so I could do it in various ways. I could either do similar triangles or use gradients. What I think is useful is कि मुझे पता है अगले part में मुझे expectation निकालनी है, तो मुझे उसके लिए equation of the वो चाहिए होगी. So what I do is I try to construct the equation of this curve 3,0. तो मैंने कहा इसके gradient जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 minus 2/3/3 which is -2/9. इसका y इंटरसेप्ट वैसे ही 2/3 नजर आ रहा है. उसकी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई -2/9x+3. अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 निकालनी है, मैं 2 से 3 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको, एंड दैट वुड गिव मी द राइट आंसर, राइट. There's some calculation mistake. यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है. क्या एरर है? 2/3. Okay, sorry, 2/3. Thank you. Okay. Expectation x f of x. तो ये तो सिंपल बात है. अब 0 to 3 करना है ना. ओके, 0 आपने लिमिट लगा ली. आप जो बता रहे हो कि अच्छा ये एग्जाम में लिमिट लगा के दिखाना जरूरी होती है. डोंट स्किप दिस पार्ट. ये मुझे पता है आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो. डोंट स्किप इट ऑन द एग्जाम. ओके, वन. ओके, ये हो गया, सिंपल था. The area is x centimeter square of a petal of a certain kind of flower have been mu. In the past, it has been found that mu equals to 8.9. Following a change in a climate, a botanist claims that the mean is no longer 8.9. Areas of a random sample of 200. So it's not claiming whether it has decreased or increased. But it looks like a two-tailed test to me, and the results are summarized by this test. The botanist claim at the 2.5%. So I'm going to say that H naught is mu is 8.9 and H1 is mu is not 8.9. Okay. Then I draw my critical region. Okay.
क्या हो गया? ओके, सो क्रिटिकल रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। टू टेल्ड है तो 1.25 यहाँ पे और 1.25 वहाँ पे, सो दिस गिव्स मी 98.75. ओके, 98.75 मुझे तो नहीं लगता डायरेक्ट मिलेगा। चाहिए रहा, सॉरी, हाँ 2.24। अब एक्स बार जो है वो मुझे दिया हुआ है कि the areas of a random sample of 200 from this kind of, and the results are summarized by ये एक्स बार। अब एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। This question is sort of a merger between sampling and estimation और hypothesis testing में से related ही होते हैं, but 9.25 आ गया। अच्छा, इसमें फिर सिग्मा भी मिसिंग होगा, तो पहले मुझे सिग्मा भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा आ जाएगा, पहले मैं सिग्मा स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो वो बनेगा 200 over 199, 17850 divided by 200. Okay, 17850 divided by 200 minus 9.25 का square into 200 divided by 199. I'm just checking my numbers if I have them right. सही है, अभी तक numbers सही हैं मेरे। Now let's test the test statistic को z value में convert कर लेते हैं। z आ जाएगा 9.25 minus 8.9 divided by 3.706 over 200 and a root. पॉजिटिव आ रहे हैं ना फातिमा? How is your answer negative? राइट, मैंने कोई गलती नहीं किया। हाँ, पॉजिटिव गया। Okay, this is in the reject H not region, so you there is evidence that mean has changed. Okay. Okay, customers arrive at a shop at a constant rate of 2.3 per minute. State another condition for the number of customers arriving per minute to have a Poisson distribution. Customers arrive independently and at random. Okay, I think that should be the correct answer. Okay, it is now given that the number of customers arriving per minute has a distribution of 2.3. Find the probability that exactly 3 customers arrive during a 1 minute period. So ये तो बड़ा simple हुआ। Good, चलो। Find the probability that more than 3 customers arrive during a 2 minute period. पहले लैम्बडा चेंज करना पड़ेगा। More than 3. So 1 minus probability of 0, 1, 2, 3. Okay, you guys have done this, so I'm just going to write the answer, okay? Okay, then says 5 1 minute periods are chosen at random.
So I'm talking about 5 trials now. ये फौरन से click होना चाहिए. Find the probability that no customers arrive during exactly 2 of these 5 periods. So my probability of success is no customers. So ये मुझे निकालना पड़ेगा कि लैम्डा जब 2.3 था तो नो कस्टमर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? नो कस्टमर्स आने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो पेंसिल सीम्स टू स्टॉप वर्किंग. एक मिनट. I don't know, something's happened. Wait. ओके, सो आपने कहा कि पहले पहले लैम्डा जो था वो 2.3 था, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 थी वो थी e power minus 2.3 e power minus 2.3 and you're telling me that that was equals to 0.1003. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आपके पास 5 इंटरवल हैं and you want to be successful in only 2 of those intervals, so you're going to say that 5C2 Q is 0.8997 power 3 and 0.1003 power 2. That is what you've done. 0732. Okay. Okay. So you have to be flexible about distributions. ये change होती रहती हैं. Then it says a biscuit manufacturer claims that on average 1 in 3 of the packets contains the price offered. Jerry suspects that the proportion of packets containing the price is less than 1/3. Then I have to carry out the test. So I start collecting the data. कि ये जो था वो 1/3 था. Jerry कह रहा है कि नहीं जी less than 1/3 है. Can you please put yourself on mute, whoever this is, Shamir? Okay. In order to test the manufacturer's claim, he buys 20 randomly selected and he finds that exactly 2. So my test statistic is 2. Probability of X less than or equals to. So 0, 1, 2. Has someone done this calculation? आप जो मैंने किया वही क्या था? क्या डिफरेंट आ रहा है इसमें? अब ना एक मिनट मैं एमएस खोल लेता हूँ. देखो मैं मुझे पहले इसका नंबर बता दो क्या आ रहे हैं. 2. अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ. नहीं ये नंबर 0 पॉइंट आप मुझे नंबर गलत बता रही हो.
176 आ रहे हैं। ये रहना सही तो है। आपकी कैलकुलेशन में गलत हुई है, कैलकुलेटर पे टाइप गलत किया है ना। व्हाट कैलकुलेटर डू यू हैव? द वाइट वन। तो वाइट वन पे तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आती है नहीं आती? क्यूमुलेटिव करके। अच्छा ये देखो, शो इट टू यू। ये मेरा चैनल है, इस पे जाना। कैन यू सी द यूट्यूब? और इधर मैंने जो है ना इसमें कहीं अपलोड की हुई है, ये यहाँ पे बाइनोमियल नजर आ रही होगी ना, पॉइजन और बाइनोमियल अपलोड की हुई है, इसको देख लेना एक दफा। शामिर इट्स ऑन माय यूट्यूब, बाद में देख लेना आप लोग। वीडियो नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर लैपटॉप से आना पड़ेगा, एंड देन आई कैन शो यू द कैलकुलेटर। अभी मेरे पास आईपैड पे कैलकुलेटर नहीं होता ना शो। ओके, well it's there on my YouTube, you can watch them directly. My YouTube is called Salman Farooq. Okay, you can just find it and YouTube search it and you'll find it. Okay, so 0.0176 aa gaya. This is less than the significance level. So reject H not. There is evidence. Okay. नहीं सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा क्लेम डिफरेंट लोगों का होगा ना। हाँ ओके, सो देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट जेरीज क्लेम। ओके, वो उसने लिखा हुआ इस तरीके से है ना, तो आई जस्ट गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड। टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम ना, क्योंकि टेस्ट मैन्युफैक्चरर के लिए टेस्ट कर रहे थे ना आप। तो आपने जब एच नॉट को रिजेक्ट किया तो आपने मैन्युफैक्चरर की बात रिजेक्ट किया। ओके, okay. Maria also suspects that the proportion of factors containing the list less than one third. She also carries out the 10% significance level. She will reject the manufacturer's claims if she finds that there are three or fewer packets containing the price of it. So उसका जो critical region है या उसका rejection region जो है, वो बता रही है कि मेरा rejection region जो है वो x less than or equals to 3 है। Okay, find the probability of a type 2 error. In Maria's test, if the proportion of packets containing the price offer is actually 1 in 7. Okay, तो critical region अगर ये rejection region है तो acceptance region क्या होगा, और greater than 3 होगा। और जब हम टाइप 2 एरर की बात करते हैं तो हम एक्सेप्टेंस रीजन ही निकाल रहे होते हैं। सो मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 विद द न्यू p, विद द न्यू p। ओके, सो मैं कहूंगा ये बनता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 एंड 3 इटसेल्फ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 20 सी 0। शामिर, रिजेक्शन रीजन के लिए ट्रायल एंड एरर करते हैं, बट यहाँ पे देखो उसने खुद ही बता दिया ना कि रिजेक्शन रीजन है क्या, है ना। तो मुझे वो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, सर साया ने तुम लोगों को मेरा नंबर दिया हुआ है।
अच्छा क्लास के एंड में ले लेना. इन केस यू हैव अदर प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट आस्क मी, क्योंकि सचायन ने देखा था कि मैं सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाता. So you can just if he doesn't get time, then you can ask me, okay? मैं बाद में नंबर दे देता हूँ. इसकी प्रोबेबिलिटी किसी ने निकाली है. 0.318 आ रही है शायद. ओके ये टाइप 2 एरर हो गया. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टाइप 2 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. टाइप 2 एरर वैसे क्या होता है? टाइप 2 एरर इज accepting h naught when h naught is false. So it means accepting the manufacturer's claim when it is false. Okay. मैंने in context दे दिया है तो सही बात है. Okay. Okay, I think this is the last question for this exam. Let's just quickly do it. ये heavy linear combinations का one takes a lot of time. It says before a certain type of book is published, it is checked for errors which are then corrected. For costing purposes, each error is classified as either a minor error or major error. The number of minor and major errors in a book are modeled by this. You should assume that no continuity corrections are needed when using these models. A book of this type is chosen at random, and the probability that the number of errors is at least 200 more than the number of major errors. So minor is more than major errors by at least 200. That is what I'm asking you. So मेरा एक नया variable construct हो जाएगा which is called difference. Difference is minus minus major minus minor, so it becomes 380. ये सही है ना? Okay, सही है. Good. ये हो गया. The cost of correcting a minor error and a major error are 20 cents and 50 cents respectively. Find the probability that the total cost. मैंने कहा cost का एक नया variable बन जाएगा. It's point, अब dollars में बात हो रही है तो मैंने कहा 0.2 into minor plus 0.5 into major. So cost will then have a normal distribution. 0.2 into 380 or 210. सही है. ये बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन.
मेरा 1.779 आ रहा है. इससे 1.778 लिया हुआ है. No. Nine six 24. सही. Done.